academia, investors, bankers, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It gives me great pleasure to welcome you all to this very special occasion. An occasion that not only reflects progress, but purpose, not just construction, but conviction. Today, we are marking 3 major milestones under Sindh's public-private partnership framework, all achieved in collaboration with Abbtakk Holding. You're aware of the 3 projects that we're doing today. We've got the commercial operation for Nabisar Vajihar water supply project, and I'll talk more about these projects. We're executing the concession agreement for NED Technology Park, and we're signing an MOU for TP4 wastewater treatment project. Together, these 3 milestones tell us a powerful story of Sindh's commitment to energy security, innovation, sustainability, and global partnerships that deliver real results for our people. People have talked about the Nabisar Vajihar water supply project. I believe, I don't know if there's a documentary especially on the Vajihar project that you'll show now, but you'll have to actually go there and see what this project entails. We are building, as you all know, we've got the 6th largest coal reserves in the world in Tharparkar, which were not being used until 2008 at all. And at that time, the co-chairman of the Pakistan People's Party, wasn't the president then yet, he called the federal government and he asked the Prime Minister and the Chief Minister at that time to make the Third Coal and Energy Board. I've had the privilege of being part of this board from day one. I'm the only member of surviving from the original board, and now I chair this board. And in Tharparkar, we've created a wonder, that's what I'll say, because people did not believe in it at all. In Tharparkar, we are producing the cheapest electricity, which is the number 1 under the takeoff agreement with the federal government, and we've done more than 3,000 megawatts of electricity from Tharparkar. The problem was water. How do we get water there? The first project we did, we used the groundwater, but obviously that is only, we had to treat it and it was very expensive. So we had to take water to Tharparkar. We designed this project, and again, we have not used river water or clean water because we've got scarcity of that. And we created the Nabisar Vajihar water supply project. This will take 45 cusics of water to Tharparkar. The total project cost, and again, the total project cost is 60 billion rupees. It was actually 69 billion. We've saved about 9 billion rupees in this project. And the total project cost is 60 billion rupees. It's the largest public-private partnership project that we've done to date. And we got Abbtakk Holdings to come in collaboration with us. The first G2G project under public-private partnership. Later on, the federal government has also replicated that. There have been other projects, but this was the first G2G project that we did. And it's a land park project. It wasn't easy. Lots of problems from day one. We had, but even before we started the project, it started earning accolades. We got awards for this project from the very beginning, even before the financial close. But the journey was not easy. We faced inflationary pressures, global commodity shocks, supply chain disruptions with COVID and all, exchange rate volatility, and record high interest rates. Yet, despite all these challenges, the resolve of the government of Sindh, and I really want to thank Abbtakk Holding for holding on to this project, and despite all the difficulties continuing with it,
We did not waver, and today, with the grace of Almighty Allah, and with the help of all our partners, we've been able to complete this project, and we are achieving the commercial operation today. For this, I especially congratulate Abbtakk Water Private Limited for completing the project within agreed timelines and with a saving, as I said, of almost 9 billion rupees. Sindh government's contribution to this project, the 60 billion rupee project, is less than, it's 9.6 billion rupees, less than 10 billion. The rest we've raised through Abbtakk and through lenders. So this was the real concept of public-private partnerships, that we could do large projects through public-private partnership, where the Sindh government would just put in equity, give it the institutional support, or government support, and the private sector with its efficiencies could come in and complete these projects. The second project, the NED Science and Technology Park. Again, several problems in this project, and I'm really happy that we've come to this stage, and I'm also a little, I'd say a little embarrassed also, because we've done this opening several times for this project. But I hope today is the last time that we are doing the inauguration. Now we'll continue with groundbreaking. The problems that we faced, and I see one of the benefactors of the sisters here, the Civil Aviation Authority. And I've spoken about this a number of times, but I'll talk about it again today. The Civil Aviation Authority. Now the airport is what, at least 15 kilometers away from the site of this project, or if you do a straight line, it'll at least be 10 kilometers, I think. They said that you can't build such a high building there. And right next door, even closer to our building, there was a building which was even higher. And for some reason, they would just not listen to us. And initially, the plan was, and that is what has delayed this project, the plan was, I've forgotten the number of stories or the height, but we had to reduce the height to almost half of what it was. So we needed more land, because now we had to build 2 towers, if I remember correctly. I see there's a model there, and that will be unveiled, so then I'll finally know what the plan is. We were supposed to get status of a special economic zone, again under the IMF pressure, and no, they put a cut-off date, and they said your project isn't approved yet. Our project has been there for last 4 years now at least. Projects which started after us got the special economic zone agreement, but because we did not have this Civil Aviation Authority, NOC as they call it, we could not get the special economic zone status for the project. I'm grateful to Abbtakk that they continued with us despite all these challenges. I'm grateful to the team of the NED University, which persisted. They said no, and I thought it was the end at that time, when I even wrote to the Federal Finance Minister to get us approval for the special economic zone, and they replied in negative. And at that time I thought, now this project is over. But then I learned that no, Abbtakk wants to come in, because we feel that even if we don't get the special economic zone status, this is going to be not only a lucrative project in terms of the money that will make for the NED University and the government and Abbtakk, but apart from that, this project, and I was told at that time that we've already sold a certain percentage of the office space that we're creating. So they persisted, and today we are doing the concession signing agreement, which has been delayed for some time, and I hope, and I asked Mr. Muteri before we came here, and they said that inshallah in a few months we should be doing groundbreaking, and I have requested them that this project should be built at lightning speed, so that the time that we've lost we make up. So this is the second project we're doing, and we don't stop there. And Abbtakk has been with us. We did Nabisar Vajiyar,
we are doing the concession agreement for the NED Science and Technology Park and for the future. And I'm sure we'll have many more, but to complete the hat trick, we are doing the TP4, signing of the Memorandum of Understanding for TP4 project. I'm grateful to the Mayor of Karachi for collaborating in this, for Karachi Metropolitan Corporation, and inshallah, the problems that we have in the city of Karachi would be resolved with this project. मैं थोड़ा सा यही सारी चीज़ें कोशिश करूँगा बहुत जल्दी उर्दू में बोल लूँ. आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है. हम 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं. एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, नबी सर वजियार की वाटर पाइपलाइन जो थर के अंदर पानी ले जाएगी और जिसकी वजह से हमारे ब्लॉक 1 के पावर प्रोजेक्ट्स 1650 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स को पानी मिलेगा और 1650 मेगावाट बिजली ऐड होगी थर के कोयले से पाकिस्तान के पावर सेक्टर में. इस पे काफ़ी अरसे से काम चल रहा था और तकरीबन ये पीपीपी का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो अभी तक हुआ है. हम इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे, नए प्रोजेक्ट इससे और बड़े करेंगे, लेकिन इस वक्त ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है तकरीबन 60 अरब रुपए का. और इसकी इनिशियल 69 बिलियन तकरीबन 69 अरब रुपए की एस्टिमेट थी. हमने 9 अरब रुपए बचाए हैं और 60 अरब रुपए में ये प्रोजेक्ट किया है जो कि 1650 मेगावाट बिजली पैदा करने में थर के कोयले से काम आएगा. ये प्रोजेक्ट अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हुआ है. दूसरा प्रोजेक्ट एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है जो कि तकरीबन 8.5 लाख स्क्वायर फीट का हमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी पार्क हम बना रहे हैं. फिर एनेटेक होल्डिंग हमारे प्राइवेट पार्टनर्स यही हैं. एनेटेक होल्डिंग जो कुवैत की कंपनी है, मैं एनेटेक के बारे में बता दूं, ये सब्सिडरी है कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की जो कि ओन्ड है गवर्नमेंट ऑफ कुवैत की. और ये पहले प्रोजेक्ट्स हैं. नबी सर वजियार पहला प्रोजेक्ट था जो हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे किया है और एक सब नेशनल गवर्नमेंट हुकूमत सिंध ने ये कुवैत गवर्नमेंट की एक सब्सिडरी के साथ ये प्रोजेक्ट हम कर रहे थे जो ख़त्म हुआ है. आज कमर्शियल ऑपरेशन हो रही है नबी सर वजियार की. एनईडी टेक्नोलॉजी पार्क इंशाल्लाह ताला एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर ख़ास तौर पे और उसके साथ बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे नए इंजीनियर्स पैदा होंगे उनको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वो सारी फैसिलिटी वहाँ बैठ के उनको वो सारी फैसिलिटी होगी कि दुनिया की जो मॉडर्न तरीन या सबसे ज़्यादा फैसिलिटेशन जिन जिन मुल्कों में होती है. मतलब आपको मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ कि आपको सिलिकन वैली की सारी फैसिलिटीज़ एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेंगी ताकि हमारे इंजीनियर्स जो जाके बाहर जिन्होंने बहुत वंडर्स किए. मैंने देखा ये कुछ दिनों पहले मैं गया था और मैं आपको बताऊँ ये टेस्ला की जो ड्राइविंग ये सॉरी क्या कहते हैं उसको अनमैन ड्राइविंग जो व्हाटएवर आई नो द वर्ड दे कॉल इट, उसके पीछे जो इंजीनियर है वो एक पाकिस्तानी लड़का है जिसने काम किया था. तो ये फैसिलिटी हम इधर भी दे सकते हैं कि हमारे इंजीनियर्स आके ये काम इधर कर सके. तो इंशाल्लाह ये भी एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा. आज हम उसकी कंसेशन साइनिंग कर रहे हैं. बहुत जल्द इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करके हम काम स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह रिकॉर्ड टाइम में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे. और मैंने हमारे जो पार्टनर्स हैं एनेटेक अब्दुल्ला अल मुतेरी साहब उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है और उनसे कहा है कि आपको जो फैसिलिटेशन चाहिए सिंध हुकूमत देगी, आपने इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करना है. तीसरा प्रोजेक्ट जो आज हम साइन करने जा रहे हैं एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो है TP4 का ट्रीटमेंट प्लांट 4 जो कि और उसमें मैं मेयर कराची का कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फैसिलिटेट किया. ये इनके दरमियान होगा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनेटेक ताकि ये एक प्रोजेक्ट बना सकें. और मुझे
पूरा यकीन है कि जो एनटेक ने हमारे साथ मिलकर बाकी 2 ये प्रोजेक्ट्स किए, ये तीसरा प्रोजेक्ट जो शायद इन दोनों से बड़ा होगा, मेरा ख्याल है बल्कि यकीनन इन दोनों से बड़ा होगा, वो प्रोजेक्ट हम जल्द से जल्द इसको शुरू कर सकेंगे। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ एनटेक का, मैं शुक्रगुज़ार हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट का, हमारे सारे पार्टनर्स का। और आपने वो सारी लिस्ट देखी थी, हमें ये आई एम रियली ग्लैड कि हमारे साथ पाकिस्तान के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं, हमारे साथ हर कमर्शियल बैंक की रिलेशनशिप है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट के साथ, और हमने इसको एक ऐसे तरीके से, और मैं ये सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा, बहुत लोग फेडरल गवर्नमेंट भी कई बार हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट की तारीफ़ कर चुकी है, और दुनिया भर में इसको 6th बेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क इन एशिया कहा था। और मैं उसमें एक आपको बता दूं, सिंध एक मुल्क नहीं, सिंध सब नेशनल है, उस पूरे जो एनालिसिस की थी उन्होंने, उसमें सिर्फ 2 सब नेशनल गवर्नमेंट्स को, एक हिंदुस्तान की भारत की सब नेशनल गवर्नमेंट थी और एक पाकिस्तान का सिंध सूबा था, और हमें उन्होंने 6ठा रैंक किया था और पाकिस्तान को 12वां रैंक किया था उसके अंदर। तो ये हमें फ़ख्र हासिल है, और उसकी वजह से मैं शुक्रगुज़ार हूँ। फेडरल गवर्नमेंट भी हमेशा ज़िक्र करती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमारी जो बेहतर कारकर्दगी है उसका, और उसके लिए मैं रिपीट नहीं करूँगा, मैंने वैसे आई थिंक आई हैव एक्सीडेड माई अलॉटेड टाइम फॉर द स्पीच, लेकिन जो हमारी सक्सेसेस हैं वो आपको दिखाई। वी स्टार्टेड विथ हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेज वे, वो पहला प्रोजेक्ट था जो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किया। माशाल्लाह उसको 15 साल हुए थे जब वो 16 साल हो गए कंसीव किए हुए, और वो अब प्रॉफिट में जा रहा है। झिरक मुलाकातियार ब्रिज जो सबसे बड़े पुल इस वक्त इंडस के ऊपर है, वो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में की। कराची ठट्टा ड्यूल कैरेज वे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किया। हमने सर्विस सेक्टर में गए, स्कूल मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस के, एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, हेल्थ के अंदर हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सर्विस सेक्टर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने ये नबी सर वजीआर प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये इंडस्ट्रियल, ये जो आगे चल के कराची एनडी यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पार्क बनना है। और इस वक्त जो हमारा अपना रिकॉर्ड है कि इंडस के ऊपर या किसी वाटरवे के ऊपर सबसे बड़ा ब्रिज झिरक मुलाकातियार था, उसको बाय फार हम 12.5 किलोमीटर या उससे थोड़ा कम 12.2 किलोमीटर्स का कंदकोर कश्मीर ब्रिज कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और इंशाल्लाह उसमें काफ़ी इश्यूज थे, आपको सबको पता है, लेकिन अब वो हम जून 2027 में उसको हर हाल में कंप्लीट करेंगे किसी भी तरीके से, ताकि वो जैसे बताया कि इधर तो डॉक्यूमेंट्री में बताया था कि वो कश्मीर से घोटकी 150 किलोमीटर से कम करके 30 किलोमीटर कर देगा, लेकिन एक्चुअली वो बलूचिस्तान को अब कंट्री से कनेक्ट करने के लिए, इसके वो सारी बलूचिस्तान की ट्रैफिक आती है जेकोबाद, और उधर से फिर इस ब्रिज से क्रॉस करके फिर वो मोटरवे पे चढ़ जाएगी। हमारा जो राइट बैंक है उसको अब कंट्री से कनेक्ट करने के लिए कम से कम 100 किलोमीटर का फ़र्क डालेगी। एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगा उसके जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे वो पूरा पाकिस्तान उठाएगा। तो ये हमारे आगे के इशारे भुट्टो इंशाल्लाह। दो जब स्पेशल असिस्टेंट साहब अपनी तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा ड्यू टू कंप्लीट इन 26, मैंने उनको थोड़ा बहुत मैं नाराज़ इन 25। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे, आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।